Hello students, today we are going to start a new topic that is heredity and its transmission. तो जनरली मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज़ प्री मैंडलिज्म थ्योरी फर्स्ट, उसके बाद हम बात करेंगे मैंडलिज्म एंड आफ्टर दैट पोस्ट मैंडलिज्म और वी टॉक अबाउट मॉडर्न जेनेटिक्स. सो प्री मैंडलिज्म में हम वो सारी थ्योरीज की बात करेंगे जो मेंडल से पहले दी हुई थी, रिलेटेड टू द जेनेटिक्स और रिलेटेड टू द इनहेरिटेंस. सो प्री मैंडलिज्म कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी. Various views were prevailing about the process of heredity before the rediscovery of Mendel's law of inheritance in 1900. So बहुत सारी थ्योरीज जो थी वो दी गई थी related to the heredity before the rediscovery of Mendel's law of inheritance, और some of the important or some of these concepts are given below. So कुछ थ्योरीज जो हैं हम एक्सप्लेन करेंगे जो मेंडल से पहले दी गई थी इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए. सो फर्स्ट थ्योरी जो थी वो है, first theory is your pre-formation theory. This theory was proposed by two Dutch biologists, that is Van Rossum and Bonnet. This theory states that a miniature human called homunculus is already present in the egg and sperm, which grows into human being after formation of zygote. तो प्रीफॉर्मेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग कि देर आर सम मिनिएचर, कुछ स्मॉल मिनिएचर हैं, कुछ स्मॉल पार्टिकल्स हैं, माइक्रो पार्टिकल्स, मिनिएचर ह्यूमन जिसे उसने टर्म दी दैट इज़ ह्यूमिकुलस, जो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं किसमें, एग में और स्पर्म में, और ये ग्रो करते हैं ह्यूमन बीइंग में ओनली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ zygote. So the formation of that is new organism takes place from these homunculus only after the formation of zygote or only after fertilization. उसके बाद दूसरी थ्योरी है दैट इज थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस. दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट दैट इज वॉल्फ. This theory states that egg and sperm are undifferentiated cells. They differentiate into various organs and parts only after fertilization in the zygote, resulting in the development of adult tissue and organ. Now ये theory क्या explain करते हो? इस theory के according कि जो egg है और वो sperm है, egg and sperm they contain undifferentiated cell, and these undifferentiated cell get differentiated into various organs and tissue only after fertilization. Next, theory of acquired characters. So theory of acquired character की बात करें तो proposed by famous French biologist that is Lamarck, and this theory states that a new character once acquired by an individual shall pass on to its progeny. सो थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर के अकॉर्डिंग कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी करेक्टर को एक्वायर करता है तो वही करेक्टर जो है वो पास होता है, वो पास होगा टू इट्स प्रोजेनी, टू इट्स ऑफस्प्रिंग. नेक्स्ट इज योर थ्योरी ऑफ वेंजेंस. दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय फेमस इंग्लिश नेचुरलिस्ट दैट इज चार्ल्स डार्विन. This theory states that very small, exact but invisible copies of each body organ and component called gammules are transported by the bloodstream to the sex organ. These gammules gets assembled in the gametes after fertilization, resulting in the development of respective organs. Now, इस theory के according कि there are some small but invisible copies हर एक body organs की हैं और उन कंपोनेंट्स को बोल दिया गैम्यूल्स. ये गैम्यूल जो हैं ये ट्रांसफर होते हैं ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, किस में, हमारे सेक्स ऑर्गन्स में, और ये गैम्यूल जो हैं दे गेट असेंबल्ड इन द गैमेट्स एंड आफ्टर fertilization they develop into respective organs. Next theory is your germplasm theory. What the germplasm theory is? First, this theory was proposed by German biologist August Weismann. It states that body tissue are of two types, that is germplasm, that is reproductive tissue or producing gamete, and somatoplasm, all other tissue except reproductive tissue. Thus the transmission of character from one generation to other takes place through germplasm, and any change in germplasm will leads to change in next generation, and this theory is accepted in a broad sense. क्या मतलब इसका? इट मीन्स कहता है कि जो बॉडी टिश्यू हैं वो दो टाइप्स के होते हैं. एक है जर्मप्लाज्म जो प्रोड्यूस करता है गैमेट्स और वी यूज टर्म रिप्रोडक्टिव टिश्यू, एंड दूसरा सोमैटोप्लाज्म मीन्स ऑल अदर टिश्यू एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव टिश्यू. सो दस इसके अकॉर्डिंग कि जो ट्रांसमिशन हो रही है करेक्टर की फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इट टेक्स प्लेस मेनली विद हेल्प ऑफ
germplasm. So germplasm are responsible for the transmission of character from one generation to another. And कोई भी change germplasm में lead करती है change in the next generation. If germplasm undergo any change, then it also leads to a change in the next generation. And actually this theory is accepted anyhow in a broad sense. थैंक यू. नेक्स्ट हम इसमें जो है स्टडी करेंगे मेंडलिज्म. आप चाहे तो इसको पास करके, वीडियो को पास करके आप यहाँ से अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं.